आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के बेस्ड पे में निफ्टी के मूवमेंट्स और निफ्टी के पोटेंशियल ट्रेड्स एंड लेवल्स डिस्कस किया था। वो वीडियो आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं बहुत ही जल्दी से आईसीआईसीआई बैंक की एक एनालिसिस करने वाला हूँ और हम लोग ये देखने वाले हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में कैसी मूवमेंट हुई है एंड गोइंग फॉरवर्ड किस किस लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी रिजल्ट पोस्ट की है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे जो 26 जुलाई है उसमें आईसीआईसीआई बैंक जब खुलेगी तब उसमें कैसे ओपनिंग हो सकती है, वेदर इट विल बी अ गैप अप गैप डाउन, और उसमें अगर हमारा कोई पोजीशन है तो उसको हम किस तरह से ले सकते हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स इज, ये जो पिंक लाइन्स आप देख रहे हो ये मैंने पहले जब हमने आईसीआईसीआई बैंक पे वीडियो बनाई थी ये तब की है, एंड दिस इज नॉट विच आई ड्रू राइट नाउ। लेकिन द थिंग विच आई वांटेड टू शोकेस इज यू सी why this I didn't trade earlier, and this is exactly the reason. So last Friday में थर्सडे से ही मैं समझ गया था कि आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छी पोजीशंस बन रही हैं जस्ट बिफोर इस रिजल्ट। लेकिन मैं जनरली कोई भी रिजल्ट के पहले, और अगर डेफिनेटली अगर मैं जानता हूँ कि वो सेक्टर सच अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं बिकॉज ऑफ कोविड वेव और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, तो ऑब्वियसली मैं उसमें अपना पोजीशंस बनाता नहीं हूँ या रखता भी नहीं हूँ। एंड इन जनरल मैं कभी किसी कंपनी के रिजल्ट्स के पहले पोजीशन कैरी करना बहुत ही रिस्की समझता हूँ, एंड द मूव विच कम्स इन द कंपनी आफ्टर द रिजल्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं ऐसे आईसीआईसीआई बैंक से कुछ ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि वो कुछ डिफरेंट करेगी और डिफरेंट रिजल्ट देगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इवन इफ यू सी दैट दिस वाज a support, resistance, which was a multi-month resistance since last February, and only this time, so the last session just before result, it gave a breakout of this session, and there was a huge volume participation. So everything looks really good from a data point of view for ICICI Bank, right? So one of the things is, अगर ICICI बैंक का रिजल्ट मार्केट को अच्छी लगी तो बेसिकली इट कैन इजीली गो फॉर 700 एंड मोर इन द शॉर्ट टर्म, एंड राइट नाउ इट क्लोज्ड एट 676 लेवल्स। लेकिन आपको एक अगर अदर वे राउंड अगर कोई गैप डाउन हुई तो कौन कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगी और कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। सो द वन थिंग इज, यू कैन सी दिस इज अ ब्रेकआउट एंड द 660 levels was a breakout zone. So basically the first thing which could happen is sorry, the first thing it could happen is it opens like this and then it reverses. That would be one very good option, but I really don't think that if a gap down happens at 660 then a reversal would be in store very quickly. So one of the things you have to see from this is ICICI बैंक पिछले बहुत सारे weeks में, so this is, we are looking on a daily chart, it has been making a higher low, right? And this is exactly where your trade comes in. So if it's so this low which was made, so the low was 639, so let's say 640. So अगर ये 640 ये zone अगर ये violate हुआ, so then this breakout which happened on last Friday before the result, so that would actually qualify as a failed breakout. और जब ये फेल्ड ब्रेकआउट होता है देन द चांसेस ऑफ पीपल लिक्विडेटिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंस फ्यू डेज देयर हैज़ बीन दिस ग्रीन वॉल्यूम विच इज़ मोर देन द एवरेज वॉल्यूम। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोजीशंस बनी हैं, लेकिन इफ़ 640 इज़ ब्रोकन then theoretically going forward there could be a really drastic downfall in ICICI Bank. And what would be the right level that the ICICI Bank can take support from? Suppose हमने कोई शॉर्ट ट्रेड लिया है तो उसमें हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि किस लेवल्स पे जाके हम लोग को अपना ट्रेड क्लोज करना है। So you see this is exactly something round about 620 which is round about here. So यहाँ पे 620 से 600 रीजन में यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक सपोर्ट है
और यहाँ से the chances are high that this particular bank would be able to revert. So this is a very good structure. So first of all, try to see if it at all is able to maintain the levels of 640 that is here, and if 640 is violated, that is here, this one, then try to see if it reverses from 620, because this is more or less a medium term support line. Or ICICI Bank, you can see that there were multiple occasions जहाँ पे ICICI Bank यहाँ से support ली है, right? And this is true since December of this year. So as a result of which you can easily say that this is going to act like a good support, and theoretically between 620 and 630 इसमें एक उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए. बट इफ़ अनफॉर्चुनेटली अगर ये 620 अगर ब्रेक की, then there would be a more drastic selling, and then I expect a region of just a moment here. So then this would be a very good zone of 590, and going forward I think the chances of ICICI Bank going towards 590 are much higher than ICICI Bank going towards say 700. Though 700 abhi iske bahut hi nazdik hai, but the way it has posted its result, so just keep a track of how 640, whether 640 is actually maintained. अगर 640 अगर मेंटेन नहीं हुआ और अगर ये इस लाइन से जैसे 620 तक आके अगर फिर भी रिवर्ट नहीं की, सो बेसिकली देन 590 एंड 585 लेवल्स वुड बी समथिंग विच वुड be coming really soon in ICICI Bank. और अगर हम एक वीकली चार्ट भी देखें हैं, सो यहाँ पे आप समझ सकते हो, नाउ दिस लाइन इज एक्चुअली मेकिंग मोर सेंस, एंड so now you can actually see that why this line is so important, because this has acted like a very good sort of resistance support, and so theoretically it should actually hold it. Now last time जो breakout आई है which looks really good and nice in a weekly chart, but if you look into the daily chart, लेकिन अगर आप कोई weekly chart देखते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सब breakouts जब आती हैं, and especially if you are looking on a very longer time frame, say for example, so whenever a breakout happens, right, so just like here, say for example यहाँ पे एक breakout आई थी, तो ये जो आप volume देखोगे, so these volumes they actually make a lot of they play a huge role. लेकिन अगर आप last हाँ अभी तो ठीक है, so month is towards the end, so but all the moves which are coming lately in ICICI doesn't come with a good volume. As a result of which I would be really skeptical about this. The move which came, though it looks decent on a daily one, but this is much lesser than what is actually expected on a multi I mean if a particular company is going for all-time high breakout, then theoretically it should, and that too which is coming after tight consolidation for so many months. So ये February month से start हुआ था, and this is July, so at least 4-5 months have passed. So theoretically I expected more volume, and the volume was not there. So maybe this is more of a trap, and so theoretically you can see that if the levels of 650 are even broken, so that actually would negate this whole green candle, and from वहाँ से आपको फिर एक negative sentiment आपको बनाने लेनी चाहिए. और जब तक 650 होल्ड है, और इसमें अगर if it opens above 650 and if able to hold 650 levels and hold in the sense कि शायद कभी एक a dip may come towards 650 or 640, but अगर immediately उसमें reversal नहीं आती है, so then theoretically things really don't look good for
for ICICI, and then going forward you can very well expect to see the next 620. और अगर फिर 620 भी नहीं आई, so then from there you can easily see the levels of 590 or 585. So this video is going to give you some trading ideas about Nifty, or higher side में definitely 700 is a big sort of psychological level, and definitely अगर वो 700 को क्रॉस की, so going forward 720 would be a very decent target for profit booking. But more on this after we have the opening on Monday. Definitely मैं Monday 10:30 बजे जो market watch का edition बनाता हूँ, definitely I will try to give a very good update on how the positions are getting created in ICICI Bank and Reliance and ITC for example, क्योंकि वो result based move होगी, और then we can actually once the positions they get exhausted within the first 1 hour, then we can gauge the sentiment of the market and the sentiment of the street for these counters. एक बार 1 घंटा चला जाए तो हम लोग फिर समझ सकेंगे कि अच्छा ठीक है, जितने भी पोजीशंस थे लॉन्ग साइड को कॉल शॉर्ट साइड, या कोई अपना नया पोजीशन बनाया अदर ऑन द लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड, तो इसको फिर हम लोग स्टडी करके हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे. सो गोइंग फॉरवर्ड आई वुड सजेस्ट ट्राई टू सी वेयर ICICI बैंक ओपन्स इन द ओपनिंग, एंड ट्राई टू सी इफ इट इज एबल टू मेंटेन 650. अगर 650 के ऊपर रहा तो उतनी भी ख़राब नहीं है. अगर 640 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ी सी ख़राब सिचुएशन होती है, बिकॉज देन इट्स अ वेरी नियर टू क्वालिफाई एज अ फेल्ड ब्रेकआउट, और उसमें जितने भी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो डाइल्यूट होते हैं, उसके साथ शॉर्ट्स भी क्रिएट होते हैं. सो देन वी वुड बी एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ 620 एंड 590 इन शॉर्ट टर्म, मे बी बिफोर दिस एक्सपायरी. और ये भी हो सकता है कि द एक्सपायरी वुड बी वेरी नियर 600 levels, but we will see after the market opens on 26. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you in taking a trade and planning your trade accordingly. As always अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपना ट्रेड लें. मेरी ICICI बैंक की जो रिज़ल्ट की एनालिसिस है वो आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगी, और उससे आपको पता ही चल जाएगा कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ रिज़ल्ट को लेके. But again, market is supreme, and so if people in the market decides it's a good result, because market is always forward looking, so theoretically you should be getting good moves in ICICI Bank. Thanks a lot for listening, and enjoy your Sunday. Don't think much. We will see how positions are there. Our positions are made on Monday. That's tomorrow. Bye bye.